Okay. Okay, best of luck. Thank you. Tao কেনেকুৱা লাগিছে তোমাৰ কিবা থাকি গ'ল নেকি নাইস বহুত ঢিলা আছে কিন্তু হ'ব আৰু আহা Bye bye. 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 Wala, mag-grab sa gaya lagi. Okay. Best of luck. Thank you. Bye bye. Bye bye. Bye bye. So সিহঁতেতো গ'ল তিনিটাকে পঠালোঁ আৰু চাওকচোন কি অৱস্থা কৰি থৈছে মই সিহঁতক সদায় বুজাওঁ যে বস্তুবিলাক একদম জাগাত থবা তোমালোকে কিন্তু ৰাতিপুৱা যেতিয়া খৰদৰ হয় নহয় তেতিয়া সিহঁতে চব বস্তু এনেকেই থৈ যায় আৰু তাৰমানে মই সিহঁতক বুজাই এইটো ক'ব পৰা নাই যে মই সদায় কওঁ যে বস্তুবিলাকৰ ভৰি নাই যে সিহঁতে নিজে নিজে গৈ জাগাত থাকিব তাৰ কাৰণে এটা মানুহ এংগেজ হ'ব লাগে আৰু দিনত মোৰ ওচৰত ইমান বেছিও টাইম নাথাকে মোৰ বুটিকৰ কামো থাকে কিন্তু সিহঁতে মানে আল্টিমেটলি এইটোৱে হয় এই চব পানী খোৱা গ্লাছ ইয়াত পৰি আছে এইবিলাক গোটেই চফাত এইবিলাক বস্তু পৰি আছে এইবিলাক এতিয়া মই চিজিল কৰোঁতে বহুত টাইম লাগিব তাৰ উপৰি ডাইনিং টেবুলৰ অৱস্থা সেয়া চাওক মানে কিছুমান কাম কৰিব পাৰি কিছুমান সিহঁতে এক্সট্ৰা কাম বহাই থৈ যায় আৰু মই এতিয়া এইটো প্ৰচেছত আছোঁ যে সিহঁতক শিকাই আছোঁ যে যিমান পাৰে বস্তুবিলাক জেগাই থ'বৰ কাৰণে আৰু এটা কথা ঘৰৰ ফেমিলি মেম্বাৰ গোটেইখিনিয়ে যদি নিজৰ কামবিলাক নিজে কৰি বস্তুবিলাক জেগাই থৈ যায় তেতিয়াহ'লে কি হয় অকল এটা মানুহৰ ওপৰতে ভাৰ নপৰে কিন্তু আজি পক্ষীক ফেঞ্চি ড্ৰেছৰ কাৰণে ৰেডি কৰাব লাগে এইফালে চাওক সেয়া এইটো ৰুম পুৰা বৰবাদ দি আছে মানে যেতিয়া মই নৰ্মেলি পঠাওঁ তেতিয়াতো ইমান বেছি লেতেৰাও নহয় আৰু মই অলপ ৰুমৰ ছেটআপ চেঞ্জ কৰি ল'বকৈ চাব পাৰিছে ইয়াতে ডে বেডখন আছিলে এইখন মই সেইটো ৰুমলৈ লৈ গ'লোঁ আৰু মোৰ গোটেই চুইং মেচিন আৰু কম্পিউটাৰ ইয়ালৈ লৈ আহিলোঁ এটা কাৰণতে লৈ আহিলোঁ সেইটো ৰুমত সিহঁতে থাকে আৰু কি হয় এইটো ৰুমটো অলপমান সৰু আছিলে মই মানে কাম কৰিবলৈ ইমান স্পেচ নাপাইছিলোঁ আৰু প্লাছ তাহাঁতে আহি যোৱাৰ পিছত তাহাঁতে ডিষ্টাৰ্ব কৰি থাকে চ' সেইকাৰণে মই বোলো নাই এইটো ৰুম সিহঁতক এক্সক্লুচিভলি দি দিওঁ চ' ইয়ালৈ মই ডে বেডখন লৈ আহিলোঁ ডে বেডৰ অৱস্থাও নাই এইবিলাক চব এতিয়া ঠিক কৰিব লাগিব ঠিক কৰোঁতে মোৰ চবতছে বেছি টাইম যায় এইবিলাক বস্তু জেগাই থোৱা কেতিয়াবাতো খঙো উঠে সঁচাকৈ সদায় কৰিবও মন নাযায় কেতিয়াবা এনেকুৱা লাগে যে নকৰোঁৱে আৰু কৰিলেও এনেকুৱা হয় যে ঘৰৰ কাম এনেকুৱা যে কৰিলে গম নাপায় নকৰিলেহে গম পায় চ' কেতিয়াবা মোৰ মন যায় যে একেবাৰে নকৰোঁ কালি অৱশ্যে পাৰিয়ে নিজৰ পঢ়া টেবুলখন চিজিল কৰিছে আৰু পক্ষীৰ এইবিলাক কিতাপ ইয়াতে থৈ এইবোৰ ময়ে চিজিল কৰি দিছোঁ কিন্তু ডেইলি বেচিছত সদায় লেতেৰা হয় সদায়ে চাফা কৰিব লাগে সদায়ে একেকেইটাহে কাম তো মই কেতিয়াবা কওঁ যে তোমালোকে কামবোৰ নবঢ়াবাই জেগাই বস্তুবোৰ থৈ যাবা তেতিয়া বহুত সুবিধা চাওঁ কেতিয়ালৈকে শিকে ছোৱালীকেইজনী কিন্তু শিকাই আছোঁ মই এতিয়া যিহেতু এতিয়া মই ঘৰত থাকোঁ অলপমান টাইম পাওঁ চ' সেয়া দিনৰ আৰম্ভণি কৰোঁ এতিয়া আৰু হাজবেণ্ডৰ কাম চাওকচোন মই তেওঁক বাৰে প্ৰতি কওঁ যে হেল্প মানে এনেকুৱাকৈ কৰিবা যিটো কি মোৰ মানে হেল্প হয় সঁচাকৈ কিন্তু তেওঁ কি কাম কৰে চাওকচোন মই তেওঁক ৰাতিপুৱা কৈছোঁ যে গাখীৰখিনি গৰম কৰা আৰু কৰ্ণফ্লেক্স দিব লাগে মই পক্ষীক ৰেডি কৰি আছোঁ তেওঁ গাখীৰ চাখীৰ একো গৰম কৰা নাই তেওঁ কাপোৰ ধুবলৈ দিছেগৈ ইটছ অ'কে কাপোৰ ধুবলৈ দিছেগৈ কিন্তু চাওকচোন ইয়াক কেনেকৈ মেলি থৈ গ'ল মই তেওঁক কৈ আছোঁ যে তুমি এইটো টাইম ৱেষ্ট নকৰিবা এইখিনি কাপোৰ এনেও এনেকৈ মেলিব নোৱাৰি এইখিনি মই আকৌ মেলিবই লাগিব যিটো কাম মই আকৌ কৰিব লাগিব সেইটো কৰিবৰ দৰকাৰ নাই কিন্তু নাই তেওঁ সেইটোৱে কৰিব আৰু এইফালে যিটো কাম একচুৱেলি কৰিব লাগে এয়া চাওক গা ধুলে নহয় বাথৰুমত টাৱেলখন এনেকৈয়ে থৈ গ'ল চ' মই সেইদিনা তেওঁক লাষ্ট আল্টিমেটাম দিছোঁ যে তোমাৰ টাৱেল মই নেমেলোঁ কাৰণ এইটো কাম কৰি যাব পাৰি গাটো ধুই উঠিয়ে চিধা টাৱেলখন এইটো ৰুম ইয়াৰ পৰা এইখন বেলকনি ইয়াতে মেলি যাব পাৰি কিন্তু সেইটো নাই কৰা আৰু বিচনাখন পাৰি যাব কওঁ চ' বিচনা এনেকৈ পাৰে চাওক এই কম্বলকেইখন জাপিলে সেইটো ছাইডত থ'লে গাৰু একো মানে ঝাৰা চাৰা নাই চ' এই কামত মই একো হেল্প নাপাওঁ একচুৱেলি মই ব্লগত কিয় কৈ আছোঁ ব্লগত এইটো কাৰণেই কৈ আছোঁ মই তেওঁলোকক এইখিনি কথা সদায় তেওঁলোক অহাৰ পিছত কওঁ কিন্তু তেতিয়ালৈকে কামবিলাক অলৰেডি হৈ যায় কিন্তু ব্লগত এইটো কাৰণে কৈছোঁ ভিজুৱেলি যেতিয়া চাব তেতিয়া গম পাব যে একচুৱেলি লিটাৰেলি মোৰ একো হেল্প নহয় এইবিলাক কামেৰে এইখন মই কম্বল আকৌ জাপিম আকৌ ভালকৈ থ'ম তাতকৈ এইটো কাম নকৰাই ভাল সেইটো টাইমত এনেকুৱা এটা মোক কাম কৰি দিয়াই ভাল যোনটো কি মই আকৌ কৰিব দৰকাৰ নাই
যেনেকৈ টাৱেলখন মেলি থৈ গ'ল, এইবিলাক সৰু সৰু এটা হেল্প হয়। আই হোপ এইটো ব্লগ চালে তেওঁলোকে গম পাব। বাদ বাকী খোৱা বাচনখিনি চিংকত থৈ গ'ল, বা কিছুমান বস্তু যিবিলাক জেগাৰ পৰা উলিয়ালে জেগাত থৈ গ'ল, এইটো টেডি বিয়াৰ যেনেকৈ এইটো পাৰি ৰুমত থাকে, এইটো তাত থৈ গ'ল। সেইবিলাক কৰিলে মই অলপমান হেল্প পাওঁ। কিন্তু না, এতিয়া ফাইনেলি যাওঁ, কাপোৰখিনি বাহিৰত মই মেলি দিওঁগৈ। তাৰপিছতো বহুত কাম আছে, অনিমাটো অহাই নাই। চ' একেবাৰে মই ঘৰটো সাৰি মেলি লওঁ, আৰু সাৰি মেলি জাবৰবোৰ পেলাই লওঁ। তাৰপিছতহে মই ব্ৰেকফাষ্ট খাম। सो मैं ये बोल रही थी कि घर के काम ना दिखते नहीं है, बिल्कुल भी नहीं दिखते हैं। और जो लोग मतलब चले जाते हैं ना घर से, जैसे मेरे बच्चे वो स्कूल चले गए और मेरे हस्बैंड वो ऑफिस चले गए, तो उन्हें वापस आके घर बिल्कुल वैसे ही मिलता है जैसा रोज़ मिलता है। और उन्हें लगता है कि ये सब काम ऐसे ही हो जाते हैं। मैं तो कभी उनको ये भी बोलती हूँ कि जो चीज़ें तुम लोग फैला के जाती हो ना, उन चीज़ों में पैर नहीं लगे हुए कि वो खुद जाके अपनी अपनी जगह पे चले जाएंगे। उसके लिए किसी ना किसी को एफ़र्ट लगाना पड़ता है। तो मैं उनको अभी इस समझाने के प्रोसेस में हूँ, क्योंकि पहले तो देखिए मैंने घर कभी नहीं संभाला है, क्योंकि मैं शादी से पहले से ही मैं जॉब करती थी, और बिल्कुल फुल टाइम जॉब था मेरा। तो हमेशा ही मुझे मेड रखना ही पड़ता था, और पूरा दिन मैं कभी ऐसे घर पे रही नहीं थी। और मेरे बच्चे भी इवेंचुअली उसी तरह से ही बड़े हो गए थे, तो हमेशा कोई ना कोई मेड रहती थी। और बहुत सारे काम घर तो संभाला है मैंने, ऐसा नहीं है कि फुल टाइम नहीं संभाला है। तो बहुत सारे काम मैं ऑफिस जाने से पहले करके जाती थी, उसके बाद फिर आके मैं करती थी। फिर भी मैं उनको तब ये भी बोलती थी कि सारा तो करना पड़ता है, तो उससे अच्छा बेटर है कि आप लोग थोड़ा सा हेल्प करो। लेकिन तब क्या होता था कि मेड वगैरह रहते थे, तो सब कुछ मेड के ऊपर ही आ जाता था, तो उन लोगों को ही करना पड़ता था। और ये उनका काम भी था, क्योंकि पैसे लेते थे वो हमसे, तो घर के सारे काम उनको संभालने होते थे। तो वो लोग जैसे मैं करती हूँ उस तरह से तो नहीं करते थे। कहीं ना कहीं गड़बड़ तो ज़रूर होती थी कि सामान कहीं का कहीं रख दिया, कहीं पे फैला दिया। लेकिन फिर भी ऊपर ऊपर से घर तो साफ़ ही दिखता था। और कभी भी इस चक्कर में मेरे बच्चों को, मेरे हस्बैंड को ये नहीं पता लगा कि घर के काम कैसे होते हैं, किस तरह से होते हैं, और क्या क्या कामों में उनको मुझे हेल्प करना चाहिए। এইটো ৰুম চাওক, মই এতিয়া সাৰিলোঁ, কিন্তু অকল আজি সাৰিলেই নহ'ব। ল'ৰা ছোৱালীবিলাকে কাম কেনেকৈ বহাই চাওকচোন। এইবিলাক আপোনালোকে দেখিছে, এইবিলাক গোটেই ক্ৰেয়নবিলাক সিহঁতে কাটিলে, কটাৰীয়ে কাটি কাটি এনেকৈ টুকুৰা টুকুৰা গোটেই জেগাই পেলালে। আৰু এইখিনি যদি মই আজিয়ে মুচি নিদিওঁ, এইখিনি চাওকচোন বেগবিলাক থাকি যাবনে নাথাকে। তাৰমানে এনেকুৱাকৈ সিহঁতে কাম বহায়, আৰু সিহঁতক কৈও লাভ নাই যে কাম কৰা মানুহ অহা নাই, বা মামাৰ কঁকালৰ বিষ নকৰিবা। কোনোবা এটা টাইমত মানে সিহঁতে লেতেৰা কৰিয়ে দিয়ে। तो अभी मैं थोड़ा सा उनको रोक टोक करती हूँ, थोड़ा सा उनको समझाती हूँ कि कुछ कुछ काम अगर आप लोग करके जाओ, जैसे जगह जो चीज़ें आपने उठाई है उस चीज़ को वापस उस जगह पे रख के जाओ, तो घर के बहुत सारे काम कम हो जाते हैं। और जो घर में रहती है ना, उसके लिए भी हेल्प हो जाता है। तो मैं यही बोलती हूँ कि हेल्प ऐसे करो जो काम फिर दोबारा मुझे ना करना पड़े। तो इस तरीके का हेल्प करो तो भी मुझे थोड़ा हेल्प जैसा लगता है, अदरवाइज़ वो हेल्प जैसा नहीं लगता है। और मुझे पता है कि मैं इवेंचुअली उनको समझा दूँगी, तो वो लोग धीरे धीरे ये चीज़ समझ जाएंगे और मुझे हेल्प मिल जाएगा।
আৰু এইটো চাওক চকুৰ এক্সাৰচাইজ দিছে মোক চকুকেইটা একচুৱেলি মই ফ'কাছ কৰিব নোৱাৰোঁ মোৰ মানে ডাবল ভিজনৰ অলপ প্ৰব্লেম আছে চ' এক্সাৰচাইজ কৰি থাকিব লাগে মাজতে মই একেবাৰে এৰি দিয়াৰ কাৰণে আৰু বেছি মানে বেয়া হৈ গ'ল চ' এতিয়া আকৌ মই মানে কৰিব লৈছোঁ আৰু এবাৰ ভাবিছোঁ যে নাই কৰিয়ে থাকিব লাগিব কাৰণ কষ্টটো মই নিজেই পাওঁ এইটো চাওক ঘৰত লাগি থকা নেমু পকি আছিলে মই ছিঙি আনিলোঁ অলপমান নৰসিংহ পাত ছিঙি আনিছোঁ দালিত দিবৰ কাৰণে ये देखिए नींबू मेरे पीछे जो है ना नींबू का पेड़ है हम लोग का तो वहाँ पे पका हुआ था वो मैं तोड़ के लाई और कुछ करी पत्ता लाई हूँ और भूत जलकियाओ लगिसे मोर गছত बेंगेना लगिसे मैं देखाऊँगी बोले ये वाला ये देखिए ये किंग चिली है असम का जो फेमस चिली है ना किंग चिली भूत जलकिया बोलते हैं इसको हम वो लगा हुआ है मेरे पेड़ में और बैंगन एक छोटा सा बैंगन लगा हुआ है ये देखिए ये छोटा नहीं है थोड़ा लंबा ही हो गया है ये देखिए और आज ही मैंने इसको डिस्कवर किया है ओके केनेका हल Amazing! अमेजिंग ভালকে ক'ব পাৰিলা কিন্তু অলপ লাইক ভয় লাগি গৈছিল পাহৰি গৈছিল হয় নেকি আচ্ছা একো নাই বাৰু নাৰ্ভাছটো হোৱা যায় ন ষ্টেজত এতিয়া কাপোৰ খুলিবা सो पोखी आ गई है स्कूल से और पोखी का एक्चुअली उसके स्कूल में इंटर हाउस फैंसी ड्रेस कंपटीशन था ये हमको फ्राइडे को ही बोला गया था कि सैटरडे को कुछ एक वीडियो बना के पोस्ट करने के लिए मतलब देने के लिए ताकि वो लोग सिलेक्शन करेंगे तो सैटरडे मेरा मतलब उसी पूरे उस चक्कर में ही मेरा चला गया था जो कुछ भी मुझसे बन पड़ा मैंने किया उसको मैंने मिसिंग एक ट्राइबल गर्ल बनाया था मिसिंग इसलिए बनाया था कि मेरी फ्रेंड है पोरोमी तो उसके पास सारे ड्रेसेस थे तो वहाँ से हेल्प मिल जाएगा ये सोच के और पोरोमी ने मुझे बहुत ज़्यादा हेल्प भी किया उसने सारे कपड़े वगैरह मुझे दिए आइडियाज़ दिया या फिर उनके लैंग्वेज में किस तरह से बोला जाता है ये सब तो सैटरडे को मैंने वो वीडियो बना के भेजा था और बिल्कुल ही जल्दबाजी में मैंने बना के भेजा हुआ था लेकिन थैंकफुली वो सिलेक्ट हो गई थी और दूसरी बात परी का भी पोएम रिसाइटेशन का था उसी दिन उसका पोएम रिसाइटेशन का सिलेक्शन का वीडियो भेजना था जो मेरे हस्बैंड ने उसको सिखाया था और थैंकफुली वो भी सिलेक्ट हो गई और उसका कल हो गया था उसका जो कंपटीशन था वो कल हो गया था और पोखी का आज था तो मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ हालांकि मैं बहुत ज़्यादा रिज़ल्ट ओरिएंटेड मदर नहीं हूँ आई एम प्रोसेस ओरिएंटेड मदर मतलब मैं प्रोसेस में ज़्यादा ध्यान देती हूँ कि ड्यूरिंग दिस प्रोसेस उन लोगों ने क्या लर्न किया क्या नहीं किया रिज़ल्ट जो भी हो मैं ना उन पे दबाव कभी भी प्रेशर नहीं डालती हूँ कि तुमको जीतना ही है या फ़र्स्ट आना ही है वो एक्चुअली मैंने कभी अपने लाइफ में भी वो चीज़ अप्लाई नहीं की और कभी मैं उनके लाइफ में भी ये प्रेशर नहीं देना चाहती हूँ कि उसका एंड रिज़ल्ट क्या होगा क्योंकि जो लास्ट में रिज़ल्ट होता है वो एंड होता है प्रोसेस का एकदम लास्ट वाला पार्ट होता है लेकिन प्रोसेस में बहुत इम्पोर्टेंट होता है पूरा प्रोसेस हम अच्छे से करके जाए इसका ये मतलब भी नहीं है कि एंड रिज़ल्ट इम्पोर्टेंट नहीं होता लेकिन बस उसी को फोकस करके हम लोग करें तो फिर प्रोसेस रह जाता है और दूसरा मैं इस वजह से भी बहुत ज़्यादा खुश हूँ क्योंकि जब मैं पहले जॉब में थी तो ये जो सारे उनके कंपटीशन वगैरह कुछ भी एक्स्ट्रा करिकुलर कराना होता था तो मैं अवॉइड ही कर देती थी उसको क्योंकि मेरे पास टाइम नहीं होता था प्रिपेयर कराने के लिए और जब कभी भी मुझे बहुत सारे लोग बोलते थे कि आप तो बहुत ही सुपर वुमेन टाइप के हो घर भी संभालते हो जॉब भी संभालते हो तो मैं ये फ़ील करती थी कि वो मेरा कोई कैपेसिटी नहीं था हर कोई जॉब कर सकता है हर कोई संभाल सकता है लेकिन जो सेक्रीफाइस कर रहे थे ना साइलेंटली वो मेरे बच्चे थे क्योंकि उन्होंने बहुत कुछ लाइफ में बिना जाने ही सेक्रीफाइस कर दिया है उनका वो ग्रोइंग स्टेज उनका ये सब करने की इच्छा अगर होती भी थी तो मन में दबा के रख देते थे क्योंकि उनको पता था कि मम्मी के पास उतना टाइम नहीं है और अभी बहुत सारे लोग मुझे जब बोलते हैं कि आपने जॉब क्यों छोड़ दिया आप लाइफ में इतना सा भी चैलेंज नहीं एक्सेप्ट कर सकते हो या व्हाटएवर ये आपका रॉन्ग डिसीजन है राइट डिसीजन है तो मैं बस स्माइल कर देती हूँ और कुछ नहीं बोलती हूँ क्योंकि
लाइफ में राइट रॉन्ग डिसीजन कुछ नहीं होता है, लाइफ में बस खुशी होती है। और ये जो खुशी मुझे इनको इस तरह देखने में मिलती है ना, वो मेरे लिए बहुत ज़्यादा बड़ी बात है। और उसके आगे मैं कुछ नहीं सोचना चाहती हूँ कि मैंने लाइफ में कोई रॉन्ग डिसीजन लिया या राइट डिसीजन लिया। मैं कभी भी स्टिक नहीं करती हूँ। मेरे लिए मैं अपने हार्ट को ही फॉलो करती हूँ। आप लोग अगर मेरे व्लॉग्स पहले से देखते होंगे तो आपको लगता ही, मतलब आपको पता लग ही गया होगा कि मैं हमेशा ही वॉट एवर माई हार्ट सेज, मैं बस उसको फॉलो करती हूँ। और खुशी छोटी छोटी चीज़ों में मैं ढूंढती हूँ। और मुझे कभी भी पैसों ने या इन सब ने मुझे कभी हैप्पीनेस दिया नहीं है। जो हैप्पीनेस आज मुझे लग रहा है, ये तो कुछ भी नहीं है, छोटा सा एक पड़ाव है। लेकिन मैं वही बोलती हूँ कि मैं प्रोसेस ओरिएंटेड हूँ और ये सारे पार्ट ऑफ द प्रोसेस है जो उनको उनकी लर्निंग में उनको बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे। सो আপোনালোকে দেখিলে পক্ষী আহিলে ফেন্সি ড্ৰেছ কম্পিটিশ্যন কৰি পেলাই আজি সোনকালে আহিলে। আৰু মই তাকে মোৰ হিন্দী অডিয়েঞ্চখিনিক কৈ আছিলোঁ, আপোনালোকেও কিজানি বুজি পাইছে। আৰু যোনসকলে বুজি পোৱা নাই মই এইটোৱে কওঁ যে আগতে তাহাঁতে যিকোনো এনেকুৱা স্কুলৰ এক্টিভিটিত পাৰ্টিচিপেট কৰিবলৈ বিচাৰিলেও সিহঁতে আগতে অকল মোৰ সময় নাইকিয়াৰ বাবে সিহঁতে কৰিব নোৱাৰে। মই প্ৰিপেয়াৰ কেতিয়াবা হয়তো কৰিলেও মানে হোল হাৰ্টেডলি মই প্ৰেক্টিছ কৰাব নোৱাৰোঁ। কিন্তু এইবাৰ স্কুল খোলাৰ পিছত ফাৰ্ষ্ট সিহঁতৰ এনেকুৱা ইণ্টাৰ হাউচ কম্পিটিশ্যন হৈছে, য'ত পক্ষীও চিলেক্ট হ'ল, পাৰিও চিলেক্ট হ'ল আৰু কম্পিট কৰি আহিছে। তাৰপিছত সিহঁতৰ কি হয়, পায় নেপায় সেইটো লৈ মই আগতেও মই খুব বেছি গুৰুত্ব দিয়া নাছিলোঁ, আজিকালিও নিদিওঁ। মোৰ কাৰণে প্ৰচেছটো বহুত বেছি ইম্পৰ্টেণ্ট। শিকি যোৱাটো, কৰাটো, পাৰ্টিচিপেট কৰাটো বেছি ইম্পৰ্টেণ্ট মই ভাবোঁ। আৰু সেইটোৰ পৰাই সিহঁতি লাৰ্ণ কৰিব। আৰু এতিয়া যেনিবা আমি কিবা এটা চব্জিয়ে বনাইছোঁ ন, চব্জি যেতিয়া আমি বনাই আছোঁ, কেতিয়াবা পিঁয়াজখন বেছি ভাজ খাই যায়, কেতিয়াবা কম ভাজে। কিন্তু আমি বনাওঁতে ইভেঞ্চুৱেলি আমি সেই প্ৰচেছটো ইমান ধুনীয়াকৈ লাৰ্ণ কৰি যাওঁ যে কেতিয়াবা সেই ফাৰ্ষ্ট বনাওঁতে চাগে ভাজিখন ভাল নহৈছিলে, কিন্তু ছেকেণ্ড থাৰ্ড টাইমলৈকে সেই ভাজিখন টেষ্টি হয়। চ' ময়ো সেইটোৱে মানুহ যে কৰি যোৱাটো, পাৰ্টিচিপেট কৰি যোৱাটো বেছি ইম্পৰ্টেণ্ট, তাত বেছি লাৰ্ণিং হয়। নাকি মই তাহাঁতক জোৰ দিয়া যে তোমালোকে জিকিবই লাগিব। যি হয় যি নহয় সেইটো মানে পিছৰ কথা, কিন্তু লাৰ্ণিং প্ৰচেছটো বহুত বেছি ইম্পৰ্টেণ্ট। আৰু মানুহবোৰে মানে মোক নানা ধৰণৰকৈ কথাবিলাক কয়, আৰু যিবিলাক কথাৰ মানে কিয় এৰিলে চাকৰি, ইমানো আপোনাৰ এই চেলেঞ্জ একচেপ্ট কৰিব নোৱাৰে নেকি, লাইফত ইমানো কষ্ট কৰিব নোৱাৰে নেকি। তেতিয়া মই ভাবোঁ মই চাকৰি কৰি থকাৰ কাৰণে মোৰ কষ্ট মোৰ বেছি হোৱা নাছিলে, মোৰ ছোৱালীকেইজনীৰ বহুত বেছি হৈছিলে। সিহঁতে যিখিনি চাইলেণ্টলি ছেক্ৰিফাইচ কৰিছে সেইখিনি চাগে সিহঁতেও নিজে গম নাপায়। আৰু মোক যোনে যি নকওক লাগিলে মই একচুৱেলি মেটাৰো নকৰে, আৰু মই হাঁহিয়ে ৰিপ্লাই কৰি থৈ আহোঁ। মনত কেতিয়াবা দুখো লাগে, কেতিয়াবা লাগে যে মোৰ ঠাইততো আপোনালোকে থকা নাই, মোৰতো লাইফটো আপোনালোকে দেখা নাই। কিন্তু ষ্টিল যোনে যেনেকৈ নকওক লাগিলে মই তেওঁলোককতো একো বুজাব নোৱাৰোঁ। কিন্তু মই মানে এইটো নেভাবোঁ যে মোৰ চাকৰি এৰা ডিচিশ্যনটো ৰাইট আছিলে, ৰং আছিলে, মই একো নাজানো। কিন্তু মই বিচাৰোঁ মোৰ হেপিনেছটো, আৰু মই সঁচাকৈ সিহঁতক যেতিয়া হেপ্পী দেখোঁ মোৰ মনটো অট'মেটিক হেপ্পী হৈ যায়। আৰু মই তেতিয়া মানে মোৰ কোনো ডিচিশ্যন মোৰ ৰাইট ৰং নিচিনা নালাগে। মানে মই জাষ্ট এইটো টাইমত মই হেপ্পী আছোঁ, এইটোৱে মোৰ কাৰণে বহুত বেছি ডাঙৰ কথা। চ' সেইটোৱে, আজি অলপমান ইম'শ্যনেলো হৈ গৈছোঁ, ভালো লাগিছে, বহুত বেছি ভাল লাগিছে। মানে এটলিষ্ট মই টাইম দিয়াৰ কাৰণে সিহঁতি যিখিনি সিহঁতৰ পটেনচিয়েল সিমানখিনি সিহঁতি এচিভ কৰিব পাৰিছে। আৰু এইটোতো একদমেই সৰু ষ্টেজ, এতিয়াতো একো ক'বও নোৱাৰি বাৰু। কিন্তু তথাপিও এই ষ্টেজটো বহুত বেছি মেটাৰ কৰে, যে সৰুৰ পৰা কি লাৰ্ণ কৰি গৈছে পিছলৈ সেইখিনিহে কামত দিব। চ' অন দিছ নোট আজি ব্লগটো শেষ কৰিছোঁ। আশা কৰিছোঁ আপোনালোকে মোৰ ব্লগটো চাই ভাল পাইছে, আৰু যদি ভাল পাইছে তেনেহ'লে লাইক কৰিব, শ্বেয়াৰ কৰি দিব, আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব নাপাহৰিব মোৰ চেনেলটো। सो बाय फॉर नाउ गाइज। और अगर आपको मेरा व्लॉग अच्छा लगा है ना, तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक दीजिएगा, एक शेयर कर दीजिएगा, और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। बाय फॉर नाउ गाइज।